Hello everyone, welcome to Digital Kaksha. In this video, we are going to discuss division of integers. As you can see here, we know that division is inverse operation of multiplication. Like 3 into 5 will be 15, 3 5 is 15. So when we divide 15 by 3, so we will get 5. Or when we divide 15 by 5, we will get 3. Okay, so it is reverse operation of multiplication. Clear? यहाँ पर आप जैसे देख सकते हो, some multiplicative statements are given. Multiplicative statements are given and here you have to write statements in division. तो एक बार हम क्या करें, 12 को 6 से डिवाइड करा दें तो +2 आएगा, और इसी -12 को 2 से अगर डिवाइड कराएंगे तो -6 आएगा आंसर. लिख सकते हैं ना रिवर्स करके. अब यहाँ पर जैसे 72 आ रहा है, 8 9 जा 72, माइनस माइनस प्लस. तो अब हम क्या करेंगे, अगर हम इस 72 को -9 से डिवाइड कराएंगे, इससे डिवाइड कराएंगे -9 से, तो आंसर क्या आएगा, -8. एंड व्हेन वी डिवाइड दिस 72 बाय -8, देन आंसर विल बी -9. सिमिलरली दिस 3 7 जा, व्हाट विल बी द आंसर हियर? आंसर विल बी +21. ओके, so you will divide this 21 here, 21 by -3. So when you divide this 21 by -3, what you will get? -7. Okay, so you will get -7. Similarly, we have to write another statement. When we divide this 21 by -7, then we will get -3. So this is how we will write these statements. Okay, rest of the one you can do on your own. Okay, now we will discuss. You can solve these questions as well. Here it is given, in division we have 4 things. What are the 4 things? 1 is the number by which we divide. Okay, 1 is the number which is divided, so that number is called dividend. Okay, another number by which we divide, that is called divisor. Then after that, here we get quotient. Okay, and at below here we get remainder. So these 4 terms are there in division. So we always put dividend here. Dividend is always divided by divisor. Okay, so here when we divide 25 minus 25, okay, so we will not write, when we divide we will not write -25, we will divide 125 by 25. Okay, so 5 za it will be 125. So there will be 0 here, or you can see put cross. So this will be quotient. इसको हम क्या बोलेंगे? This is called quotient. Here it is remainder, but remainder is 0 in this case. Okay, because 125 is exactly divisible, so the remainder is 0. This 25 is called divisor and this 125 is called dividend. Okay, so when you divide, so you got what is the question? Quotient was 5 na, but here one this minus is this 25 is negative, so answer will be -5. Okay, similarly when you divide this 80 by 5 -5, so when you divide this 80 by -5, so 5 से पहले आप 80 को डिवाइड करा के देखो. 5 1 जा 5, 3, you will take 0 carry here, 5 6 ja 30. Now it is completely divided, so answer is 16. So you will write -16. Okay, you will write 80 divided by -5 gives -16. Again the same thing, we will get the same answer when we divide two integers of same sign, है ना? If we divide two positive integer, two negative integer, or we divide two positive integer, in both cases we will get positive answer. So when you divide 36 -36 by -4, so you will get 9 plus 9. Okay, -36 को जब आप डिवाइड कराओगे -4 से, तो आपको क्या मिलेगा? +9. Now we will see the properties of division. So here you can see, when we are dividing -8 by -4, we are getting 2. So result is integer.
but when we are dividing -4 by -8, we are getting this, and this is basically 1 upon 2. This minus minus will cut down, and 4 1s are 4, 4 2s are 8. So answer will be 1 by 2. So this 1 by 2 is not an integer. Okay, it is a fraction, or you can say it is a rational number. Okay, similarly, when you divide this -8 by 3, then you will get -8 by 3. This is also a rational number. So here you are not getting an integer, not integer. Okay, this is also not an integer. So in case of division, it is not possible to get integer always. Division is not commutative for whole numbers. And commutativity भी चेक कर रहे हैं, जैसे कि क्लोजर प्रॉपर्टी तो फॉलो नहीं कर रही है क्योंकि इंटीजर मिल ही नहीं रहा हर बार हमको. और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर इन्होंने किया 8 को 4 से डिवाइड कराया पहले, -8 को -4 से, तो आंसर आया 2. बट जब -4 को 8 से डिवाइड कराया -8 से, तो आंसर क्या आया 1/2, है ना. सो यहाँ पर आप देख रहे हो कि a डिवाइडेड बाय b जो है वो इज इक्वल नहीं है b डिवाइडेड बाय a के, है ना. सो दैट मीन्स डिवीजन इज नॉट फॉलोइंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एज वेल. So it will not follow associative property as well. Okay, क्योंकि अब मान लो जैसे मैंने लिखा 16 को डिवाइड कराया पहले मैंने 4 से, ओके, फिर उसको डिवाइड कराया 2 से, है ना. तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, सो आई विल गेट फ्रॉम हियर आई विल गेट 4 एंड डिवाइडेड बाय 2, सो आई विल गेट आंसर 2. क्लियर. अब इसी में मैं ऑप्शन चेंज कर दूंगा. when I will change, I will write like this: 16 divided by 4 divided by 2. So I will write like this. So now we will divide this first. So 16 divided by, when you divide this 4 by 2, you will get 2, and when you divide this 16 by 2, you will get 8. So previous one the answer was 2, but here the answer is 8. So you can say a divided by b divided by c is not equal a divided by b divided by c. You will keep this in bracket. So this is also not equal. So associative property is also not following na in case of so division does not follow closure property, it does not follow commutative property, and it does not follow associative property as well. Clear. And here you have negative integer divided by 1 gives the same negative integer, and any integer divided by 1 gives the same integer. When you divide any number by 1, you will get the number itself. Okay, or number can be negative or positive as well. As you can see here, numbers are given na. So but यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, here you are dividing -8 by -1. So minus minus will cut, you will get 8 answer. Okay, here we will get we are dividing it by -1, so we will get negative. जब -1 से जब हम डिवाइड कराएंगे तो फिर हमें नॉर्मल प्रोसेस देखना पड़ेगा, लेकिन जब 1 से डिवाइड कराते तो आंसर हमें वही मिलेगा 11. साइन का हमें देखना पड़ेगा. अगर -1 से डिवाइड करा रहे हैं तो हमें डिविडेंड देखना पड़ेगा कौन सा है. अगर डिविडेंड नेगेटिव है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, अगर डिविडेंड पॉजिटिव है तो आंसर नेगेटिव आएगा, है ना. क्योंकि ये माइनस से माइनस कट जाएगा यहाँ पर, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो माइनस है नहीं, तो ये माइनस जो है इधर आ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा. ओके, सो हियर व्हाट विल बी द आंसर इन दिस केस? आंसर विल बी 25. So here answer will be 37. ना, here answer will be -13. Here answer will be 48 plus का. Okay. Here you can see. Is this true? 1 is when divided by a any number. So answer is 1. इसका आंसर आएगा 1/a. क्या आएगा? जैसे कि अगर 1 को हम डिवाइड कराएं 2 से तो आंसर आएगा हमारा 1/2. When we divide 1 by -2, तो आंसर विल बी -1/2. ओके, आंसर 1 नहीं आएगा, सो इट इज रॉन्ग. ओके, दिस विल बी करेक्ट. When you divide a by -1,
so you will get a upon -1. Okay, so this minus will be shift to this side and it will become -a. Clear? So second one is correct. एग्जाम्पल देखते हैं, ये एग्जाम्पल देखते हैं. In a test, +5 marks are given for every correct answer and -2 marks are given for every incorrect answer. Radhika answered all the questions and scored 30 marks. And though she got 10 correct answer. Okay. So means she should get how many marks? 50 marks मिलने चाहिए थे. She did 10 correct answers, so she should get 50 marks, but 20 marks are deducted, है ना? So what is the meaning of this? These marks are deducted means these marks are deducted because she did some questions wrong. You have to find how many questions she did wrong. So 20 marks are deducted. So you will divide it. How many marks are cutting? 2 marks is deducting, na? 2 marks are deducting. So you will divide it by 2. So you will get 10. Okay. She got 10 incorrect answers. And J also answered all the question and scored -12 marks, though he got 4 correct answers. Okay. So J ने 4 correct answers किए और उसको टोटल मार्क्स मिले -12. सो 4 करेक्ट आंसर किए, सो 4 5 जा उसको 20 मिलने चाहिए थे, बट उसको 12 मिले, तो 12 हम क्या कर लेंगे, -12 मिले, 12 भी नहीं मिले, -12 मार्क्स मिले. सो उसने कितने गलत किए टोटल, उसको मार्क्स जो है उसने अपने 20 भी खर्च कर दिया और -12 और खर्च कर दिया, तो उसने 32 मार्क्स का गलत किया. कितने मार्क्स का गलत किया? 32 मार्क्स. तो 32 को आप डिवाइड कराओगे 2 से तो कितना मिलेगा? 16. So he got 16 means 16 questions wrong. Here you can see marks given for correct answer 5. So marks given for 10 correct answers. 10 correct answers will be 50 and Radhika scored 30. Marks obtained for incorrect answers, so 20 marks. लिखा हुआ है भाई, 30 में 50 को माइनस कर दिया तो -20 आया. So -20 is showing that 20 marks are deducted. Then marks given for one incorrect answer is -2. So therefore the number of incorrect answers will be when you divide -20 by -2. So you will get +10. Clear? Similarly, we will see marks given correct answers 20 marks. है ना? He got 4 correct answers, so he should get 20 marks, but he got -12. है ना? So we will take the difference between these two numbers. So -12 and -20, difference will be -32. Okay. Marks obtained for incorrect answer. Incorrect answers के लिए उसको कितने मार्क्स उसने यूज कर लिया एक तरीके से, कितने मार्क्स का गलत किया, तो 32 मार्क्स का गलत कर दिया ना उसने भाई. जो 20 मिले थे वो भी चले गए और -12 और मिले, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 20 और +12 यानी 32 मार्क्स का गलत किया उसने. सो -32 इज शोइंग दैट he did incorrect answers of 32 marks, and marks given for incorrect answer is -2, so we will divide this -32 by -2 and get 16. Clear? A shopkeeper earns a profit of ₹1 by selling 1 pen. Okay, so profit is basically profit will represent by +1, and incurs loss of 40 paisa. Okay, -40 paisa is the loss. So stock क्या है, let's see condition 1. In particular month she incurs loss of ₹5, so that means -5, है ना, -5 का उसको लॉस हुआ. And she sold 45 pens. कितने पेन्स सोल्ड किए उसने, but even after that she got loss of ₹5. Okay, how many pencils did she sell in this period? पेन सेल करने पे उसको प्रॉफिट हो रहा है ₹1 का, तो कितने पेन सेल किए उसने, 45 पेन. तो प्रॉफिट विल बी 45 into 1, विच इज ₹45 का प्रॉफिट हुआ. ओके,
और पेंसिल सेल करने पर 40 पैसे का लॉस होता है, और उसको लॉस कितने का हुआ, टोटल लॉस हुआ है ₹5 का। तो यहाँ पर उसको कितने का प्रॉफिट हो रहा था, 45 रुपीज का उसको प्रॉफिट हुआ था, वो प्रॉफिट भी चला गया और 5 रुपीज का लॉस भी हो गया। दैट मीन्स ओवरऑल कितना उसने लॉस कर दिया, 50 रुपीज का, है ना। वही देखना यहाँ पे किया हुआ है उन्होंने, जब इसको सॉल्व करेंगे ओवरऑल उसका क्या लॉस हुआ, देखो -5 प्लस -45, सो -50 रुपीज। इसको जब कन्वर्ट किया पैसे में, सो -5000 पैसे आया, एंड वी विल डिवाइड दिस -5000 बाय -40, सो व्हेन वी डिवाइड इट we will get 125. That means she sold 125 pencils. Okay, now we'll see questions of exercise. Evaluate each of the following. So you have to evaluate them, find the answer. So here my 30 is negative and you are dividing it by 10. So answer will be -3. Here what will be the answer, you are dividing 50 by -5, -10. Okay, C number, what will be the answer, 36 minus ka 9 is of also of minus, so minus will cut down each other na, so answer will be +4. Okay, when you divide -49 by 49, so whenever we divide any number by same number, we will get 1, we will get 1, a divided by a 1, टेबल पढ़ते हैं ना, so 49 को जब आप डिवाइड कराओगे 49 से, you have to 49 1 1, you have to do this. If both are positive, then you will get +1. If one is negative, then you will get -1. Clear? If you divide, you have to divide 49 divided by -49, then you will get also +1, है ना. नॉर्मल एप्लीकेशन विल बी देयर कि अगर दो पॉजिटिव हैं, दो सेम साइन के हैं तो आंसर पॉजिटिव आएगा, दो ऑपोजिट साइन के हैं तो आंसर नेगेटिव आएगा, प्लस माइनस इसके बेसिस पे देखो. बाकी मैं यहाँ बता रहा हूँ कि सेम नंबर है ना, अगर साइन को हटा दे तो 49 49 सेम है ना. here it is of minus or here it is of plus sign, so when we divide them, so we will get 1 because we are dividing the same number by same number and answer will be -1. यहाँ पर क्या करेंगे, what we will do here, so what will be the answer here when you solve this bracket, answer will be -1, so you will write -13 and -1, so answer will be -13. Okay, here you are dividing 0 by -12, what will be the answer, answer will be 0. Whenever we divide 0 by any number, positive or negative, answer will be 0 always. Okay, but whenever we divide any number by 0, minus or plus by 0, so answer will not possible or does not defined, you can say not defined. Okay, we cannot divide any number by 0. 0 can be divided by number, answer will be 0, but any number cannot be divided by 0, answer will be not defined. Okay, let's see this one, -31 divided by -31 and -1, what you will get here, so here we will get -31 divided by -31, so here we are dividing same number by the number itself na, both of them are negative, so answer will be positive, and 31 divided by 31 will be 1, so answer will be +1. Here what we will do, we will divide first this 12 by this -36 by 12, so we will get 12 3s yani -3, and then we will divide this 3, so we will get -1, है ना. Solve this, this is negative, this is positive, both are of opposite sign, so you will add or subtract them. So answer will be -1, and divided by, when we will solve this, here we will get -1, so both, and then answer will be +1. Okay, here we are getting -1, from here we are getting -1, and when we divide both of them, we will get +1.
This part is clear. Now let's see, verify that a divided by b plus c is not equal to a divided by b plus a divided by c. This is the distributive law, but distributive law does not follow also. Okay, ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की तरह इन्होंने लिखा हुआ है, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की तरह लिखा हुआ है, बट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में यहाँ पे क्या होता है, मल्टीप्लाई, है ना, यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है. सो वी हैव टू check if this condition is true or false. आंसर्स इक्वेशंस आर गिवन, तो पहले हम एक ए को सॉल्व कर लेते हैं, बी उसी तरीके से हो जाएगा. सो वी विल पुट हेयर, ओके, ए की जगह पे हम पहले 12 रखेंगे. 12 डिवाइडेड बाय बी विल बी -4 प्लस सी विल बी +2, है ना. एंड देन हेयर वी विल डिवाइड -12 divided by -4 once, then plus then 12 is divided by 2, है ना. So first of all we will solve this. So 12 divided by, here we will get -2, so we will get -6. Okay, so from this side we are getting -6. Okay, let's see what we will get in from this side. So -12 divided by -4 plus 12 divided by 2. So when we divide this, we will get -3 plus 6. So we will get +3. Okay. So which is not equal to the previous one ना. पहले हमें क्या मिल रहा था, 6 मिल रहा था ना. हाँ, -6. So -6 आ रहा था, तो ये इक्वल नहीं है. So we can say they are not equal. This मतलब this condition is following. Okay. Here this you can write LHS is not equal to RHS. ये आपको इसी तरीके से दिया हुआ है ना, देखो नॉट इक्वल टू लगा हुआ है, मीन्स दिस कंडीशन इज, दिस इक्वेशन इज करेक्ट. इसको रख कर सॉल्व कर लेना आप, है ना. इस वाले को कर लें क्या, कर लेते हैं. -10 डिवाइडेड बाय 1 + 1, है ना. एंड इट विल नॉट बी इक्वल टू -10 divided by 1 plus -10 divided by 1. Okay, so when you divide this -10, so you will get here 2, you will get -5, which is not equal to, here you will get -10 plus -10. So this minus and minus will become plus, so here you will get -20. So both of them are not equal, so that means the given condition is correct. Clear now? Let's see question number 3 here. Question number 3 is, here you are dividing 369 and fill in the blanks is there, you have to put the number, you are getting the answer same, so you will put, what we will write here, 75, and you are getting -1 plus 75 we will put here. Okay, because when we divide this negative integer by this positive integer, we will get 1. Okay, 206, so 206 को -206 से ही डिवाइड कराएंगे, तभी हमको 1 मिलेगा. ओके, here we have to get -87, so यहाँ पर -87 ही लिखना पड़ेगा, है ना. जब 1 से किसी नंबर को डिवाइड कराएंगे तो वही नंबर मिल जाता है एज इट इज, है ना. here -48, here we have to get 2, तो 20 कितने बार में 2 आता है, 10 2 20 होता है, लेकिन माइनस भी चाहिए तो -10. यहाँ पर आप देखो 3 लाना है, सो 4 से किस नंबर को, कौन सा नंबर 3 डिवाइड होता है 4 से. हाँ, 12 जो है 3 टाइम जाता है, तो पहले तो 12 लिखेंगे, बट आंसर नेगेटिव चाहिए तो -12. ओके, write 5 parts of integer ab, 5 pairs, write 5 pairs of integer ab such that a divided by b is equal to -3. a divided by b is equal to -3. One such pair is given, एक दे दिया उन्होंने.
हमको 5 लिखने हैं। कोई नहीं, आप क्या करो, आपको माइनस लाना है ना, आंसर माइनस में चाहिए, तो आपको या तो ये इधर वाला पोर्शन या इधर वाला पोर्शन, किसी एक को तो माइनस में रखना ही पड़ेगा, एक को प्लस में रखना पड़ेगा, एक को माइनस में रखना पड़ेगा, ठीक है। अब हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर मैंने लिखा 15, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं 5, क्योंकि 5 3 जा 15 होता है। अब इनमें से किसी भी एक में माइनस लगा दूं, -15 लिख दूं या +15 डिवाइडेड बाय -5। सो दो पेयर तो यही हो गए, है ना। अरे ऐसे तो मैनी नंबर्स आर देयर, इनफाइनाइट नंबर्स। किसी की भी 3 जा टेबल आती हो आपको, बस हो जाएगा 27 डिवाइडेड बाय 9, तो -27 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो -3 मिलेगा, या +27 को जब -9 से डिवाइड करेंगे तब 3 मिलेगा। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। द टेम्परेचर at 12 noon is 10 degree above zero. So temperature is +10 degree Celsius. Okay. If decreases at the rate of 2 degree per hour, 2 degree per hour. This is minus. Minus will show that temperature is decreasing. 2 degree per hour. At what time temperature will be 8 degree Celsius below zero? That means -8 degree Celsius. Okay. So you will find the difference between them. So you will write 10. You will write 10 minus -8. तभी तो आपको पता चलेगा कितना गैप है दोनों के बीच का। +10 से लेकर और -10 के बीच में कितना गैप है, ये आप कैसे पता करोगे, दोनों को माइनस करके। सो +10 minus -8, so you will get 10 + 8, so you will get 18 डिग्री। क्या आपने डिफरेंस निकाल लिया 80 डिग्री सेल्सियस ना, 18, एंड यू विल डिवाइड दिस 18 by 2 बिकॉज टेम्परेचर इज फॉलिंग एट रेट ऑफ 2, सो यू विल गेट 9 आवर्स में टेम्परेचर क्या होगा, -8 तक पहुंचेगा। तो आपको टाइम बताना है, तो आफ्टर 9 आवर्स टाइम विल बी 9 PM, है ना। What would be the temperature at midnight? So you will find the time difference between 12 noon and 12 midnight. So how many hours are there? 12 hours are there, na? 12 hours are there from 12 noon to midnight, है ना, 12 midnight. So 12 hours में अब आप ये पता कर लो how much temperature will fall in 12 hours. So 12 into -2, -24 डिग्री सेल्सियस, इतना टेम्परेचर फॉल होगा। So you will add this in +10, भाई 10 डिग्री सेल्सियस प्लस में है, इसमें जब आप ऐड कर दोगे कितना, और -24, है ना, 24 डिग्री फॉल होगा ना 12 आवर में। सो आंसर विल बी -14 डिग्री सेल्सियस। सो द टेम्परेचर विल बी -14 डिग्री सेल्सियस एट मिडनाइट। In class test, 3 marks are given for every correct answer, 2 marks are given for every incorrect answer, and no marks for not attempting any questions. Radhika scored 20 marks. Radhika scored 20 marks if she got 12 correct answer. So for 12 correct answer, she will get total 36 marks. Okay, but she got 20 marks only. So you will subtract 36 from 20, so you will get -16. This -16 will be the deducted marks, na, marks deducted because of the wrong questions. Okay, and then you will divide this -16 by how much marks are deducting, -2 marks for one question. So you will divide it, you will get 8. So 8 wrong questions are there, na, 8 questions she did wrong. Clear? Similarly, -5 marks in test she got, Mohini. She got 7 correct answer. So for 7 correct answer, she should get 21 marks. But she got -5. So you will take the difference. So what you will do, -5 minus 21. So you will get -26, है ना। So ये माइनस भी उसने 21 तो
सारे 0 भी हो गया, 0 के बाद -5 भी मिला उसको, so you will take the difference, so you will get -26. Then you will divide this -26 by -2, so you will get 13. 13 questions she did wrong, so she got, okay, -5 marks. Now see question number, elevator descends into a mine shaft at the rate of 6 meter per minute. Okay, so it is going inside the mine at the rate of 6 meter per minute. If it descends, starts from 10 meter above the ground, so you have to find the total distance first. Okay, what is the distance from, this is the ground level, suppose एक second. So suppose we have, this is the ground level, so elevator is somewhere here, here na, somewhere, so this will be the 10 meter above the ground. Okay, and the elevator has to move -350, means below the ground it has to move -350 meter. Okay, under the mine, so the total distance will be, you have to find the difference between the initial position and final position, so -10 minus -350 you will write, so you will get -10 and plus 350, you will get 360 meter total distance above the ground and below the ground, the total distance will be 360. Okay, so the total distance is 360 meter, so then you divide this 360 meter by what, 6, because it is falling at the rate of 6 meter per minute na, so you will divide this, so you will get 60 minute, 60 minute will be the answer, or 1 hour. Okay, That's it for today. We'll meet again with new exercise. Till then, have a nice day. Goodbye. Take care. And don't forget to like, subscribe and share Digital Kaksha. Thank you.